Brother Joel for giving this opportunity to come like this and inspire to your church in India, Mumbai. और भाई जोएल के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनको इनवाइट किया, बुलाया, ताकि वो चर्च के लिए एक आशीष का कारण बन सके. Yes, I can see about 21 people are here now. और हम देख सकते हैं कि 24 परिवार जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं. Each and every one to your family, I want to greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus. और हम सारे परिवारों को प्रभु यीशु के नाम से ग्रीट करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं प्रभु यीशु के नाम से. And I was thinking, I left, I started, it was my father-in-law's birthday, so all the families got together. He's about 76-year-old now and really going strong, Pastor Gary. तो आज उनके जो ससुर जी है उनका 76वां जन्मदिन है और इसलिए बहुत सारे लोग वहां पर जमा हैं. Yeah, and I had to leave the meal. I had one serve of nice food, and I looked at the time and I said, I need to go so that I can be prepared. तो भाई जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने मतलब आधा ही खाकर उन्होंने देखा कि समय हो गया और वो यहाँ पर आ गए. Sometimes when I'm actually preaching or when I'm actually teaching, I like to teach more than I preach. I sometimes I don't feel hungry, and it was like that for me. तो जब प्रवचन से ज्यादा वो सिखाने में यकीन रखते हैं और जब उनको सिखाना है या प्रभु का सेवा करना है तो ज्यादा उनको भूख भी नहीं लगती है. So I came quickly, parked the car and came inside, turned the jug on because it's cold. As Brother Joel, I can see his hand closed and he's trying to keep himself warm. तो जल्दी जल्दी से उन्होंने वो कार में आकर कार को पार्क कर कर वो यहाँ पर आए और वहां पर बहुत ठंडी का समय भी चल रहा है. Yeah. So I came inside and turned the jug on and made a coffee myself. So if you see me drinking, it's not going to offend you if I drink a coffee in between just because I'm so dry. और क्योंकि वहां पर ठंडी का समय है तो शायद अगर वो कॉफी पीते हुए आपको दिखे तो आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि उनको जो ठंडी की वजह से है वो ड्राइनेस लग रहा है. Hope it's okay for me to drink a couple of sips. Sure. You can, please. Yeah, no, thank you so much. I got on here, turned the computer, and then thought that, oh gosh, there's a password that I need to get onto it. So I quickly went to my phone, which was flat battery. और जब यहाँ पर जल्दी से उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया तो उनको याद आया, अरे मेरे पास पासवर्ड नहीं है, और उनका पासवर्ड जो था वो मोबाइल में था. फिर उन्होंने देखा मोबाइल का बैटरी पूरी तरह से बंद हो गया या खत्म हो गया था. Actually, I didn't realize that I need a password, so I didn't ask for a password. But brother has kindly sent me the password, so I turned the battery on, tried to get the phone on, and managed to got the password, and quickly came on and joined you guys. तो शायद पास्टर को लगा था कि पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जोएल ने वो पासवर्ड उन्हें भेजा था. उन्होंने मोबाइल को ऑन किया और वो पासवर्ड लेकर उन्होंने ये मीटिंग को शुरू किया है. And sometimes, I was thinking like it's same thing. Sometimes we think we become a Christian and I'm living a Christian life, and we know everything. We've got the Bible and we know about the Holy Spirit, but sometimes we don't use the password, and that password is the name of Jesus. तो कभी कभी हमारे ख्रिस्ती जीवन में भी हमें लगता है कि हमारे पास बाइबल है, हम ख्रिस्ती है, और हम अपने जीवन को बहुत कैजुअली जैसे जीते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें उस यीशु के नाम को या यीशु के नाम को हमारे जीवन में जरूरी है हर चीजों को पाने के लिए. See, Jesus is the base for everything. He's the foundation of the Bible. He's the foundation of our faith. He's the foundation of our ministry. He's the foundation of our church. And if we don't have Jesus, then we can get into a bit of a trouble like I got this afternoon and morning.
तो यीशु वो बुनियाद है हमारी कलीसिया की, परिवार की, हमारे जीवन की। हम कुछ भी करें, बिजनेस या कुछ भी करें, उन सारी चीजों की जो बुनियाद है वो प्रभु यीशु है। Yeah. Amen. So Jesus is the foundation. Jesus is the center of everything. And we will quickly look at turn our Bible this morning time for you and the afternoon time for us here, for me and Brother Joel. तो हम जल्दी से अपने वचनों को देखते हैं, वचनों की ओर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पर तो सुबह, लेकिन उनके यहाँ पर दोपहर या शाम का टाइम है। Yes, so I don't have the clock on me, but I don't know how long we can go this session. But we're going to open up Titus chapter 2, verse 13 to 14. अ, तीतुस का दूसरा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। Okay. Titus 2 and chapter 2, verse 13 to 14. तीतुस का दूसरा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। Let somebody from anyone could just read that in Hindi or any language that you prefer, so we can go for a meditation this morning. Somebody, whoever finds, or maybe the brothers, one of the brothers. Yep, I'll read. और उस धन आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God, our Savior Jesus Christ. That's 14, isn't it? Okay. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. And 14. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगम है। रीडिंग इन इंग्लिश, who gave himself for us that he might redeem us from all the iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous for good works. Mm-hmm. Let us just bow down and 2 minutes just pray. Lord, we just thank you. Thank you for your word. Thank you for धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए। Thank you that you have not left us on our own. और तूने हमें खुद पे छोड़ा नहीं है, हमारे अपने आप पर छोड़ा नहीं है, But you gave us your Holy Spirit. परंतु तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है। And you gave us your word, that is the Bible. और तूने अपने वचनों को जो बाइबल है हमें दिया है। And you gave your son Jesus. और तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है। We thank you, Father. हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। Holy Spirit, we ask you to come and open up your word to us. पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते कि तेरे वचनों को हमारे सामने खोल दे, प्रकट कर दे। Including myself, Lord, this time. और इस पास्टर को भी प्रभु आपके हाथों में हम देते हैं। Including the translator at the time. और जो इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं उनको भी आपके हाथों में देते हैं। And the people, those who are hearing right now. और वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, may they even get a greater revelation of your word, we pray. तेरे वचनों की गहराई का प्रकटीकरण उन्हें मिल पाए, हम प्रार्थना करते प्रभु। I thank you and I praise your mighty name, Jesus. हम धन्यवाद करते और तेरी स्तुति करते हैं और तेरे नाम को हम प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु के नाम। In the most precious name we ask this prayer. यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. So I was thinking about usually what to pray. So two scriptures that I had last night, and one of them was Titus, and one of them was book of Jeremiah 29. तो दो वचन जो पिछले रात को भाई के पास थे और वो थे, पहला जो तीतुस से है और दूसरा जर्मया का 29।
And so I asked my wife, which one should I speak from? तो उन्होंने अपनी पत्नी से जब डिस्कशन किया और पूछा कि आज मैं कौन से वचन के बारे में आज बात करूं, And she said, both of them are good. और उन्होंने कहा कि दोनों भी बहुत अच्छे हैं. So I couldn't choose one over the other, but finally I settled my mind, my heart upon Titus. तो वो भी चुन नहीं पा रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ताइतस के बारे में, जो ताइतस का वचन है उसके बारे में आज बात करूंगा. I had been meditating upon this word in my early morning prayer when I get together with a group of believers in our town. तो भाई ने आज इसी वचन के ऊपर मनन किया जब वो सारे लोग जो उनके शहर के लोग हैं उनके साथ जब उनका प्रार्थना हुआ तो ये वचनों पर उन्होंने मनन किया. Yeah. So usually the Lord speaks to me when I'm praying or when I'm in a group of people praying together, and that's out of that as I'm just sharing from my heart what God has given me this morning. और जब वो भाइयों के साथ में या प्रार्थना करते हैं अकेले में, तब परमेश्वर उन्हें कुछ ना कुछ प्रकट करता है, और आज जो उन्होंने सीखा या उन्होंने जाना वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. See, I can't see each one of you. It's very hard to see and focus focus on the screen, focus on my Bible and the notes and so many little small screen. But I'm trying my hard to look at you and look at the screen. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आपकी ओर वो स्क्रीन में देखे, बाइबल में देखे या अपने नोट्स में देखे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आप सबको भी देख सके और बाइबल और वो नोट्स को भी पढ़ सके. One day I long to be with you, God willing, in India, Mumbai, God willing. अगर प्रभु की इच्छा होगी तो वो हम सबको पर्सनली आकर मुंबई में मिलना भी चाहते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो. See, that Paul's goal of writing those words, or in Titus, when we see that is Christ's death. जो पॉल का जो मेन उद्देश्य था, ये वचन जो उसने ताइतस में लिखा है कि यीशु ने किया है. The goal of Christ's death, that was, he was focusing on those two verses. Did you say Christ did? Yeah, Christ's death, उसकी मृत्यु. Okay, death. Okay. So ये जो वचन है उसके जो मेन उद्देश्य ये है कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में उसका पूरा उद्देश्य या फोकस है. So when we read 13 and when we read 14, it talks about his death. His death, there was a purpose. There was a big intention. और हम जब ताइतस का 13 और 14 वचन पढ़ते तो हम देखते हैं कि उसके मृत्यु का मकसद और उसके मृत्यु का बहुत बड़ा मकसद इस जगह पर है. And the 14, verse 14, we see, who gave himself for us. जो 14 में लिखा है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है. That he might redeem us from every lawless deed. तो वो हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले. But it's not only there. Stop the verse. Sorry sir, can you say that again? It doesn't stop there. हाँ, ये वचन जो है वो वहीं पर खत्म नहीं हो जाता. But it goes on to say that purify for himself. और वो यही खत्म नहीं होता, लेकिन आगे लिखता है और शुद्ध करके अपने लिए his own special people. उसके लिए एक ऐसी जाति बना ले Zealous. जो भले कामों में सरगम हो. For good works. वो सारे अच्छे कामों में सरगम हो. See, Christ's death, the purpose and the goal of Christ's death wasn't just to bless us on this earth with a materialistic thing. तो जब हम देखते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, तो उसके मरने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमें बहुत सारे मटेरियल चीज दे. But according to Paul's language in this verse that we see it, the Christ's death, the purpose and the goal was to purify, to set apart people after his own heart.
तो यीशु के मरने का जो मकसद है, जो पॉल इस वचनों में कहता है, वो ये था कि ऐसे लोगों को अलग करे जो परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं और जीलस है। Special people, the language I like it, special people. वो ऐसे लोग हैं जो चुने हुए हैं और उन्हें परमेश्वर ने स्पेशल लोग कहकर बुलाया है। See, special people, when we are guests come to our house, we got special seat for them. तो जब हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए हम एक अलग से एक स्पेशल जगह रखते हैं। And we really honor, we want to respect them, and we put them on a proper seat. We wash it, we clean it, we make sure that the legs are strong enough so that they can sit comfortably. और वो जो चेयर है, वो जो जगह है, उसको हम अच्छे से साफ करते हैं, अच्छे से सारी चीजें देखते हैं ताकि उनको अच्छे से बैठने को मिले। वो सारी चीजों को हम देख रेख करते हैं ताकि उनको एक अच्छा जगह वो मिल पाए। The purpose and the goal of Christ's death was to redeem us, set us apart, to choose us out of this world and make his own people, make his special people. तो प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने का जो मकसद था कि वो हम सब लोगों को छुड़ाए, हमें क्षमा करे और हमें छुड़ाए और फिर हम एक ऐसे लोग बनाए जो बहुत ज्यादा स्पेशल लोग हैं। See, special doesn't mean we are superior than the other people in the world. इस स्पेशल का मतलब ये नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं या मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे ऊंचा हूं, इसका मतलब वो नहीं है। It doesn't mean that we actually crush those who are not special people. इसका मतलब ये भी नहीं कि जो लोग स्पेशल नहीं है उन पर मैं राज करूं, उन पर मैं दादागिरी करूं और अपने आप को उनके ऊपर समझूं। Something like in America that happened with the fight between the white and the black. It's not even like that. और जैसे एक गोरा व्यक्ति और जो अफ्रीका के व्यक्ति के बीच में जैसा होता है, बिल्कुल उस तरह से ये नहीं कह रहा है। The special people, what it means in this verse is special people, those who are handpicked, those who are chosen, those who are set apart for the purposes and for the call of God. तो स्पेशल का मतलब यह है कि जिनको खुद अपने हाथों से प्रभु ने एक एक करके चुना है, जिनको परमेश्वर ने चुनकर अपने लिए बाजू में रखा है। And that doesn't matter whether we live in India or whether we live in New Zealand or whether we live in China. और हम दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, हमें परमेश्वर ने हाथ से चुनकर चुना है। So when we realize the purpose, when we understand the purpose and the goal of Christ's death was to redeem us, to call us out of this world, to choose us, to set us apart, to put us on that hill, on the mountain. जिस वक्त, जिस दिन हम समझ जाए कि यीशु के मरने का मकसद ये था कि वो हमें छुड़ाए और हमें क्षमा करे और हमें एक ऐसे कामों के लिए और ऐसे मकसद के लिए उसने रखा है और उसे बाजू में हमें रखा है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। Then we are not concerned about what the world thinks about us. We are not worried about what the neighbor thinks about me. Praise God. तो तब जब हम ये जानते हैं कि प्रभु ने हमको स्पेशली किसी काम के लिए, मकसद के लिए चुना है, तो मेरे बाजू वाले, मेरे आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या बुराई कर रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। We are not concerned about whether the world accepts me or whether the world says good things about me or bad things about me. I am concerned about what God says about me from now on. तो लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे जीवन के बारे में क्या कहते हैं, मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आज मुझे कुछ फर्क पड़ता है तो प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए क्या कहता है, उससे मुझे फर्क पड़ता है। Yeah, the first purpose or the goal for Christ's death is to redeem us from all lawlessness and to redeem us and set us apart, to choose us and call us as special people after his own heart. तो प्रभु यीशु के मरने का पहला मकसद ये था कि उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें क्षमा किया है और उसने हमें छुड़ाया है और हमें चुना है कि हम एक स्पेशल लोग बनकर उसके कार्य के लिए, उसके
कॉलिंग के लिए हम तैयार रहे। So when the situation like this happened, when the world crumbles down, when the system fell, we know that we are chosen with for a special reason, for a special purpose, because I am a special person after God's heart. तो जब हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां और सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहे, धीरे धीरे फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो नीचे जा रही है, लेकिन मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि मैं एक स्पेशल व्यक्ति हूँ जिसे स्पेशल गॉड ने एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है और मुझे उसने अलग किया है। See, so many times in Matthew chapter 7, verse 21 to 23, I was reading the other day, and it says, Jesus says that there were so many people coming and saying that they've done so many great things, but he would say, I never knew you. और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, मत्ती में जैसे लिखा है कि उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़े बड़े कार्य तेरे नाम से किए, लेकिन यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। Because it says that these people will stand at the end of the age, at the end times, and will say, Jesus, we've done this. God, we've done this work for you. We have prophesied, we have healed the sick, we have done big ministries. और ऐसे जब लास्ट का अंत का समय होगा तो लोग आएंगे, कहेंगे हमने चमत्कार किए, छंगाई की, बड़ी बड़ी सेवकाई की प्रभु, हमने तेरे नाम से बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई की, लेकिन यीशु कहेगा मैं आपको कभी जानता ही नहीं था। When we read like this scripture, we say, how come these people have brought glory to his name? They have done so many great works, so many big ministries, and yet Jesus said that depart from me, I never knew you. कभी हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग ने प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की और परमेश्वर के नाम को महिमा लाई, लेकिन आखिर में वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। This is written in Matthew chapter 7 verses 21 to 23. ये मत्ती का 7वें अध्याय में 21 से लेकर 23 या 21 से लेकर 23 तक लिखा है। Well, we think that these people were in how come they were believers, they were actually doing the work of God, and yet God says that I do not know you, depart from me. और ये वो व्यक्ति थे जो विश्वास करते थे, विश्वास से चंगाई और चमत्कार करते थे, इसके बावजूद भी प्रभु यीशु उनको कहता है कि मैं तुम्हें कभी जानता ही नहीं था। How come when we look at this, we say, how could this happen, that these people who are doing so great work for God, and God says that I do not know you. कभी आप इसके बारे में सोचते हो कि ऐसा कैसे होता है कि ये विश्वास से प्रभु के लिए कार्य करते हैं और आखिर में प्रभु कहता है मैं तुम्हें तो कभी जानता ही नहीं था। See, the special people are made for relationship. जो लोग जिन्हें उन्हें उसने चुना है, सबसे पहला वो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं। See, these people who were standing at the end of the age and they were declaring that they've done so many work for God. और ये लोग जो मत्ती 7 में लिखे हैं और वो डिक्लेयर कर रहे थे कि हमने तेरे लिए बहुत सारा काम किया है प्रभु। They had no relationship with God right from the beginning. तो उन्होंने विश्वास के काम तो किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन प्रभु के साथ कभी रिश्ता रखा ही नहीं। They were so much worried about what they could do for God and they could do for the world. बहुत कुछ उन्होंने किया या दुनिया के लिए, दूसरों के लिए किया, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। The special people are the people, those who are chosen to sit at the feet of Jesus and activate that love relationship with him. We are called to be in relationship with our living God. तो ये जो स्पेशल लोग हैं जिनको स्पेशली प्रभु ने चुना है, उन्हें चुना है ताकि वो उसके चरणों में बैठे और उससे प्यार करे और उसके साथ एक प्यार का रिश्ता निभाए। These people with the great men of God had no relationship in the end, when we see that in that scripture, in that passage in Matthew chapter 21. तो ये लोग जो चमत्कार कर रहे हैं और चंगाई कर रहे हैं, इन्होंने काम तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन प्रभु के साथ कभी भी इनका रिश्ता नहीं था। A special people that God, when God calls them, when God chooses them, when God set them apart, he calls them for a love relationship.
तो जब प्रभु ने उन्हें छुड़ाया, उन्हें क्षमा किया और उन्हें वो बाजू में चुना है, अलग से चुना है, वो इसलिए चुना है ताकि उनके साथ वो रिश्ता कर सके। So the purpose of God's or Jesus' death was to set us apart, to call us to go after his heart, to be in relationship with him, to love him from all our heart. And sometimes तो प्रभु ने हमें जो छुड़ाया है, चुना है, वो इसलिए है ताकि हमें वो एक अलग से हमें रखे और हमें उसके रिश्ते में बढ़ने के लिए उसने हमें चुना है। he beautifully explained in 1 Corinthians chapter 8 verse 3. पहला कोरिन्थियंस 8वें अध्याय और 3 वचन में ये बहुत खूबसूरती से लिखा गया है That anyone who loves God is known by God. तो जो कोई भी परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर से जाना जाएगा। Anyone who loves God is known by God. तो जो कोई भी परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर से जाना जाएगा। The special people are called to love God. तो ये वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने स्पेशली चुना है, उन्हें इसलिए बुलाया ताकि वो परमेश्वर से प्यार करें। We are not worried about what we could do for him. हम कितना और क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं, वो हमारा पहला उद्देश्य नहीं है। But the first thing first, that we are called for a relationship. We are called to love him. तो पहला उद्देश्य काम नहीं, लेकिन पहला उद्देश्य उसे प्यार करना है, उसको जानना है। We read the story in New Testament about Mary and Martha. हम नए करार में एक स्टोरी देखते हैं, जैसे दो बहनें मार्था और मेरी के बारे में। That we see the Martha and Mary both in love with Jesus. मार्था भी और मरियम भी, दोनों भी प्रभु यीशु से प्यार करती थी। But for some reason, Martha's distracted by many things around her. लेकिन मार्था जो है वो बहुत सारे कामों में व्यस्त थी और उसका सारा ध्यान उन कामों में ही था। But Mary was focused, and she was focused on one thing. लेकिन मरियम का जो फोकस था, उसका जो ध्यान था, वो केवल एक ही चीज पर था। She was focused whenever Jesus would come to their house, Mary and Martha. This story can be read in Luke chapter 10 and verses 38 if you want to read later on. We don't have time to read it at the moment, but if you want to read, it's found in Luke chapter 10. And whenever Jesus would come to their house, Mary was desiring for this love relationship. She wasn't worried about the housework is done or not, but she wanted to sit at the feet of Jesus. तो जब भी प्रभु यीशु उनके घर में आता था, अगर आपको ये वचन को पढ़ना है तो लूक चैप्टर 10 उसका 38 से आगे लिखा है। तो जब भी यीशु उनके घर आता था तो मरियम का एक ही उद्देश्य रहता था, वो काम हुआ या नहीं उस पर उसका फोकस नहीं था, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठना और उसे प्यार करना, यही उसका मकसद था। Martha got distracted from following Jesus, from falling in love with Jesus. और मार्था जो है वो बहुत कामों में व्यस्त हो गई, इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गई और वो प्रभु को फॉलो करने में वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। And we see it now in New Zealand when the church, when everything is under lockdown, and we thank God by the grace of God we come out of it. When everything is locked down, the church even doesn't know how to go on about their relationship with the living God. तो अब जब सारे चर्चेस बंद हो गए न्यूजीलैंड में और बाकी जगहों पर, तो चर्च के लोगों को पता नहीं कि अभी परमेश्वर के साथ वो रिश्ते में कैसे बने रहना है। So many people started, so many televangelists came in this lockdown. Everybody started preaching on the Facebook or social media. It is a good thing, but everybody, you saw the Facebook is just crowded with people. और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने जो प्रार्थना सभाएं हैं वो जूम या अलग प्लेटफॉर्म पे शुरू की, यूट्यूब और फेसबुक पे, और बहुत सारे लोगों ने ऐसी सेवकाई शुरू की।
So many people were concerned about what will happen about the church now. The church buildings are closed. We cannot go and meet other brothers and other sisters in the building. And while it's a good thing, और बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि अब चर्च का क्या होगा, क्योंकि हम चर्च में नहीं जा सकते हैं, अपने दूसरे भाई बहनों से नहीं मिल सकते हैं। you know what, when we have the heart like Mary and connected with Jesus, no matter what happens in our life, लेकिन अगर हमारा हृदय जो है वो मरियम जैसा हो, तो चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो भी we will not be distracted by what the world throws at us. हम बिल्कुल भी गड़बड़ी में नहीं आएंगे, हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि दुनिया हमें क्या कहती है, हमारे आगे क्या पेश फेंकती है उसके द्वारा, Because we will know that we are special people of God. क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक स्पेशल व्यक्ति है प्रभु के लिए, And we have a purpose, we have a call in this world. और हमारे लिए एक मकसद है और हमारे लिए एक कॉल है परमेश्वर का, We have a purpose different from the world. और इस दुनिया से हटकर हमारे लिए कुछ एक उद्देश्य है, हमारे लिए कुछ एक पर्पस है परमेश्वर का। And the purpose is to have that relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. और सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा पर्पस जो हमारे जिंदगी में है वो है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना। You know, I don't know about you. I totally agree and sympathetic with people, those who have lost their jobs and those who are going through so many uncertainties they have to face. But for some reason, I have and my family has enjoyed every moment that God has allowed for us to go through this lockdown. और पास्टर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ वो लोग जिनका जॉब चला गया, ये इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी समस्या से वो लोग गुजरे, मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफों को, परेशानियों को। And even when I say that I understand, I really don't understand the people, those who are dying at this stage because of not having enough food or money to provide for their family and some of the poorest part of India or other worlds. और हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनके दुख की गहराई को हम नहीं समझ सकते, जिनके पास खाना नहीं है या जो मर रहे हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले उनके दुख को समझ नहीं पाएंगे। This is how the Chinese one of the founder of one of the Chinese church movement, he says to the church, और एक चाइनीज जो मूवमेंट है वहां का एक लीडर है, उन्होंने ये कहा है, he says that we don't want God to take the persecution out of this nation. और उन्होंने कहा जो चाइना में परसिक्यूशन होता है, हम नहीं चाहते कि वो चाइना से बाहर जाए या निकल जाए। We don't want God to take the persecution from us. और वो ये नहीं चाहते कि परमेश्वर से वो ये नहीं प्रार्थना करते कि हमारे चाइना से, हमारी कंट्री से परसिक्यूशन को निकाल दे। Because he realized that the more intense persecution that they go through, their faith is on God, is getting bigger, it's getting more stronger, and the church is growing. और उन्होंने देखा कि जितना सताव उनके चर्चेस को हो रहा है, उतना ज्यादा वो प्रभु की ओर आ रहे हैं, और प्रभु के पास वो लोग आने के कारण उनका विश्वास जो है वो बढ़ रहा है। You know, in this lockdown, New Zealand is a country that where people really don't talk to each other. They so mind their own business, as Brother Joel knows. अब न्यूजीलैंड में जब से लॉकडाउन है तो कोई किसी से बात नहीं करता, वो अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। But even my neighbor would have never talked to me. He would come and actually say hello to me and ask me about how's life. और इस दौरान जो उनके पड़ोसी है वो आकर उनसे कहने लगे, पूछने लगे कैसे चल रहा है सब कुछ। Even at work, the people, those who block God out of their life, they began to talk, oh, well, this is something the Bible says. और जो लोग कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो भी अभी बात करने लगे, अच्छा तो ये इन सब चीजों के बारे में बाइबल में लिखा है। I think Charles Spurgeon says that in the face of death, mankind turns toward God. तो चार्ल्स स्पर्जन नाम के एक मैन ऑफ गॉड ने कहा है कि जब वो
मृत्यु का सामना लोग करते हैं तो वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। The lockdown's finished and everybody just forgotten about, the world, the people, those who talk about the Bible, they forgot about what Bible says and they got back to their own life doing the way they were doing again. और न्यूजीलैंड में जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या हो गया तो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और वो बाइबल के बारे में, परमेश्वर के बारे में जो सुना था, सोचा था, उसको वो भूलकर अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। In the morning prayer time, when we used to get together, probably about Friday morning 10 or sometimes 11 or 8 people in a churches, there are about 6 or 7 people, 100 or 100, more than 100 people in one church is in town like this, and we would get about 10 people in the morning prayer. और जो पास्टर के जो ग्रुप में सुबह वो लोग कुछ लोग मिलकर वो रोज प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर वो लोग प्रार्थना करते हैं। So in the lockdown, there's more and more people wanted to join, more and more people wanted to pray together, and it's amazing what happens when there is a pressure on us. और पहले बहुत कम लोग वो लोग सुबह की प्रार्थना में आते थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग आकर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो भाई कहते हैं कि ये ऐसा तब होता है जब हमारे जीवन में कोई प्रेशर आता है। And I totally understand what the Chinese brother is trying to say, that we don't want God to take the persecution away. तो इससे वो जानते हैं कि वो जो चाइना के जो ब्रदर है वो क्यों कहना चाहते हैं कि प्रभु हमारे कंट्री से सताव को बाहर ना लेकर जाए। I was just reading about a sister in China. There's hundreds and thousands of stories, but one sister, my wife was reading about this lady in China. She was put in prison, taken the passport from her, and said to her that you are a greatest threat to the Chinese government. और बहुत सारे ऐसी स्टोरीज है चाइना में, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो एक स्टोरी पढ़ रहे थे कि एक सिस्टर का उनका पासपोर्ट छीन लिया और उनको जेल में डाला और उनको कहा कि चाइना के गवर्नमेंट के लिए आप सबसे बड़ा एक धोखा हो, Because you are preaching Christ. और आप इसलिए धोखा हो क्योंकि आप प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करते हो। I totally understand. In that situation, she is not renouncing her faith and her trust in Jesus. लेकिन वो जेल में चली गई और वो सताव में भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने प्रभु यीशु को रिनाउंस नहीं कर रही है, नकार नहीं रही है, और वो अपने विश्वास से वो उसमें खड़ी है। And the churches in New Zealand were not everybody, they're doing a great job, the pastors, the many pastors, but slowly, soon, they began to complain, they began to raise their voices, and they said, this is not happening good, we need to go back to our building, we need to get back to the church, rather than waiting upon the Lord. तो ऐसे बहुत सारे, सब नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं न्यूजीलैंड में, वो कहने लगे कि ये सही नहीं हो रहा है, हमें भी अपने चर्चेस में जाना है, हमें सर्विस चालू करनी है, लेकिन प्रभु पर निर्भर रहने के बजाय वो अपने से वो कार्य को करना चाहते हैं। And when we don't realize the purpose of Christ's death is to set us apart as chosen people, as holy people. और इस चीज को हम समझ नहीं पाते, इस चीज को हम जान नहीं पाते कि प्रभु यीशु के मरने का मकसद था कि वो हमें छुड़ाए और हमें अलग से वो चुनकर अपने लिए रखे। We quickly get worried, we quickly get distracted by the word and the things of the world. हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी हमारा ध्यान भटक जाता है। जब दुनिया की चीजों को हम देखते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो भटक जाता है। The second purpose in this verse that I see, that the purpose of Christ's death, in verse 14 it says, zealous for good works. His purpose was to redeem us so that we would be special people and zealous. और जो दूसरा मकसद है प्रभु यीशु के मरने का और हमें छुड़ाने का, वो ये है कि हम एक zealous लोग हो काम के लिए, परमेश्वर के लिए। When we become zealous, we become passionate about something. We desire something desperate. That's what it means.
or a zeal. तो जेलस होना या कोई चीज का पैशन रहना मतलब उन चीजों के लिए हमारे अंदर एक आग जैसी होने लगती है उन चीजों को करने के लिए। Today in the churches, when I see in New Zealand, I don't know about India, and I know that you are more genuine for the love of the Lord than the Western churches here in New Zealand and many other parts of country world. भाई नहीं जानते कि इंडिया में एग्जैक्टली कैसे होता है, लेकिन उन्होंने सुना है कि हम इंडियन लोग हैं वो बहुत सिंसियरिटी से जेन्युइन प्रेम करते हैं परमेश्वर से उन चर्चेस से जो यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में है। You know, the Western church is not everybody, but it's beginning to feel like we are zealous more about having more power so that we could do big ministries. और ज्यादा उनका जो ध्यान इस चीज पर है, वो लोग का ज्यादा जो सोच इस तरफ है कि मेरे पास बहुत ताकत आए, मेरे पास बहुत अधिकार आए ताकि मैं दूसरों के ऊपर अधिकार कर सकूं, ये उनका सोच। The power of God is a good thing to have. परमेश्वर का सामर्थ्य रहना बहुत अच्छी बात है। The other focus that the Western church has is about the size. They are more worried about the size of the church. और उनका सोचना ये भी है कि कितने लोग हमारे कलीसिया के मेंबर हैं। Or the physical blessing of the church. They're zealous about those things. और हमारे चर्च में कितने सारे मटेरियल है या कितने सारी चीजें हमने बनाई हैं। I read a quote the other day on social media, and somebody was saying about a church. और भाई ने एक कोट को, एक किसी के बात को, कही हुई बात को पढ़ा जो कोई चर्च के बारे में कह रहा था। And it was saying that don't judge us because of the size, but by the power. और कोई ये कह रहा था कि हमारा चर्च भले ही छोटा हो, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ जो है इसमें बहुत बड़ा और अद्भुत है। But I was thinking that even in that some are proud about having the power of God. तो भले कुछ लोग प्रॉपर्टी को लेकर घमंड करते हैं या अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामर्थ को अपने यहाँ पर बड़ा समझते हैं और उसके लिए वो लोग घमंड करते हैं। We should never be zealous about having more power, even though the power is good. सामर्थ होना बहुत जरूरी है और अच्छा भी है, लेकिन सामर्थ के लिए हमको जेलस होना, हमें फायर पे होना जरूरी नहीं है। We should not be more concerned about the size of the church. चर्च कलीसिया हमारा कितना बड़ा है, मेंबर्स कितने बड़े हैं, उससे भी हमारा ज्यादा फोकस हमारा उस पर नहीं होना चाहिए। Or a physical blessing. या हमारे चर्च में कितना प्रॉपर्टी है या ब्लेसिंग्स है या कितना सारा आशीषों से हमारा चर्च भरा है। When we based our hope, our faith, and we become zealous in our churches, in our Christian walk, on these things that we can see, we can feel. जब हमारा सारा जो होप और फोकस है वो इन चीजों पर चला जाता है, जैसे कि मटेरियल ब्लेसिंग और ये सारी चीजों पर अगर हमारा ध्यान और फोकस चला जाता है, then things like this, when the lockdown happens, when the world crumbles, तो उस सिचुएशन में जब लॉकडाउन होता है और पूरी तरह से दुनिया जो है वो लड़खड़ा जाती है, we don't know how to go from this situation out. तो हमें समझ में नहीं आता है कि इससे हम कैसे बाहर निकले। See, Jesus never said that in this world we will have easy walk. यीशु कभी नहीं कहा कि इस दुनिया में आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। Jesus often warned his disciples in Matthew chapter 16. He said that he who loses his own self will gain it. मैथ्यू का 16 में उसने कहा कि जो अपने आप को खोएगा वो पाएगा। Matthew 16:26. It says, "He who loses himself will gain for the glory of God." मत्ती 16 और 26 में लिखा है कि जो अपने आप को खोएगा वो परमेश्वर के राज्य के लिए पाएगा। It's not a popular preaching anymore in the Western churches.
और आजकल ये बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में प्रचार नहीं करते हैं। If I begin to talk about that we need to be ready to suffer for Christ in this world, और अगर हम ये सुसमाचार सुनाए कि हमें प्रभु यीशु के लिए सफर करना है, उसके लिए यातना सहनी है, not many people will come to your church. I want to warn you. बहुत सारे लोग आपकी कलीसिया में नहीं आएंगे अगर आप सताव के बारे में बात करने लगेंगे। You know, Peter in Matthew, we see in Matthew chapter 6:16, Peter took Jesus to the side when Jesus said, I must die for the call of God that is upon me. और जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे मरना बहुत जरूरी है जिस काम के लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे बुलाया, तो पीटर ने प्रभु यीशु को बाजू में लेकर गया। He said, I must suffer to glorify the Father in heaven. I must die the death on the cross. और यीशु ने कहा कि मुझे उस सताव से जाना बहुत जरूरी है और मुझे क्रूस पर मरना भी बहुत जरूरी है। See, Peter, who was with him, he had been with him. He's seen every evidences of every proof of Jesus being the Son of God. और पीटर ने देखा था, उसके साथ वो रहा था और उसने उन सारे चिन्हों को देखा था, चमत्कारों को देखा था कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। And we see in Matthew chapter 16, Peter took Jesus to the side and began to rebuke Jesus and say, you must not say this. This should not happen to you. And he began to rebuke Jesus. और पीटर यीशु को दूसरी जगह पर लेकर गया और उसे वो डांटने लगा कि तुझे ये नहीं कहना चाहिए, यीशु को कहने लगा। और उसे ये कहने, सॉरी, गो अहेड। Okay, go ahead. Yeah. उसे ये कहने लगा कि तुझे क्रूस पर नहीं मरना चाहिए और तुझे ये नहीं कहना चाहिए। इस तरह से वो यीशु को डांटने लगा। But Jesus said, I must suffer. Get behind me, Satan. तो यीशु ने उसे जवाब दिया कि मुझे इस सताव से जाना जरूरी है और शैतान तू मेरे रास्ते से दूर हट जा। I must go through many things and be killed. और मैं बहुत सारे सताव से जाऊंगा और अंत में मारा जाऊंगा। See, the living church of God is not fearful about any suffering that we would face in this world. तो जो परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का जो कलीसिया है वो इन सारी सताव से या परसिक्यूशन से नहीं डरता है। It's not a popular preaching in our churches here, at least I can tell. और ये जो सताव के बारे में एक अच्छा पॉपुलर प्रीचिंग नहीं कहलाता है। You know, the Chinese church, they say that we embrace the suffering for the glory of God. तो जो चाइना में जो सताव होता है वो कहते हैं कि हम इस सताव को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए। Because they know that according to verse 13 that they were looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great Lord and Savior Jesus Christ. तो जो तीतुस 2:13 में लिखा है कि वो उस आशा का इंतजार कर रहे थे जो हमारे प्रभु परमेश्वर के आने से होने वाला है। And it might look like that Indian government is not doing anything about this, and it seems like they are losing this situation even worse. और ऐसे देखने पर ऐसा लगता होगा कि शायद इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पा रही है और सारी जो सिचुएशन है उनके हाथ से छूटती हुई जा रही है। But the special people, the chosen people that Christ did, that has redeemed us, to call us to be special people, we must be aware His special plan is to come back to receive us. तो उनको जिनको उसने स्पेशली चुना है वो ये जाने कि उसने जब हमें चुना है वो इसलिए चुना है कि वो दोबारा आएगा ताकि वो हमें छुड़ा सके और रिडीम कर सके। Many people were in New Zealand, including the church, looking when the church would be open up and when they can go and fellowship and have their church service on a Sunday. और बहुत सारे जगह पर न्यूजीलैंड में भी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चर्च शुरू हो जाएगा और वो चर्च जाएंगे और दूसरे लोगों से फेलोशिप कर पाएंगे। And while it is a good thing to fellowship in a church building on a Sunday, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बिल्डिंग के अंदर आप विश्वासियों से फेलोशिप करते हो, but Christ must come back one day. लेकिन प्रभु यीशु
दोबारा वापस आएगा। This world cannot go on like this anymore. और ये जो दुनिया है वो ऐसे ही नहीं चलती रहेगी। We as a children of God, we as a salt of this earth and the light of this earth that Jesus called us, we must be aware that only Jesus, when he comes back, when he returns to the earth, the fulfillment of that prophecy, that everything will be restored. और ये जो भविष्यवाणी है कि सारी चीजें जो आज बिखरी है वो फिर एक बार फिर एक बार वो जोड़ी जाएगी, दोबारा अच्छी बनाई जाएगी। हम I जो hear from या yes, गो अहेड ब्रदर, गो अहेड। I hear from my family, I hear from the Christians that we must raise our voice against the government. We must do this. We must stop the government doing this. And I totally agree with all those things. But I think more than that, we should not be distracted by the things of this world and lose the sight of Christ coming back to this earth. तो वो लोग जो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ में मोर्चा निकालेंगे, उनसे ये पूछेंगे, उनसे ये मांगेंगे, उन भाई कहते हैं कि वो सब सही है, लेकिन इन सारी सिचुएशन में हम अपना जो फोकस है वो प्रभु यीशु से हटने ना दे, क्योंकि वो दोबारा वापस हमारे लिए आ रहा है। Jesus rebuked and pushed. He rebuked Peter and says, "Get behind me, Satan." That he wasn't saying, "Peter, you are dumb and you are Satan," but he was saying that what God has prepared must happen to me. तो प्रभु यीशु जब पीटर को कहता है कि तू मेरे पीछे जा, तो वो ये नहीं कह रहा है कि तू बुद्धू है, वो ये नहीं कह रहा है कि तू शैतान है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जिस चीज के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है या भेजा है वो मेरे साथ जरूर होना चाहिए। In the Chinese church, when they come together like this, they are really one story where I was reading these brothers. They were preaching the gospel and they were coming to fellowship like this. And when they were meeting together, the one of the brother was praising about the suffering. और ये भाई जब वो चाइनीज चर्च के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब वहां पर ऐसे एक ऐसा फेलोशिप चल रहा था, तो उनकी जो सफरिंग है, उनकी जो सताव है, उनके बारे में वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। He was saying that, "Oh, look, I was preaching on this street and the police came and they started shooting at me, and then I jumped over the fence and I keep running and I keep running and I fell over." तो वो कह रहे थे कि कोई रास्ते पर वो प्रचार कर रहे थे और चाइनीज के जो पुलिस आकर उन्हें गोलियां मारने लगे और उन्होंने एक दीवार से फांद कर वो भागने लगे और वो वहां से बच गए। You know, we don't take to delight or glory in the suffering. हम बहुत सारे लोग आनंद नहीं मनाते, जिस तरह से सताव में हम आनंद नहीं मनाते। We like to have so much just comfortable and cozy place. और हम सबको बहुत अच्छा अच्छा जगह और अच्छा अच्छा कंफर्टेबल चीजें चाहिए हमारे जीवन में। But Jesus warned us and he said in Matthew chapter 7 that build your house on the rock. और मत्ती 7 में प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारा घर जो है उसे तुम एक चट्टान पर बांधो। When the wind comes or the no matter waves come, you will stay strong in through the storm. तो चाहे कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो सारी चीजों में तुम मजबूत बने रहोगे और तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा। It's time for us, I believe, as we going through the situation like this in India. अब जिस तरह की परिस्थिति से या सिचुएशन से हम जा रहे हैं इस भारत देश में, we need to tighten the belts right now. तो जिसे विमान में वो कमर की पेटी को बांध देते हैं, उसी तरह से हमें तैयार रहना है, हमें भी अपनी कमर की पेटी को बांध लेना है। In our faith, हमारे विश्वास में we need to start building our house on that solid rock that is Jesus. हमारे विश्वास में हमारे परिवार को उस चट्टान पर बांधने के लिए हमें शुरुआत करना चाहिए। Bible says that there will be a great falling away coming, and I won't quote you the scripture now, but there is a great falling away coming. कुछ ही दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा समय भी आने वाला है।
And I was thinking how this will happen, Lord. और जब भाई उसके बारे में सोच रहे थे कि ऐसा कैसे होगा प्रभु, When we have not taught our people to when they're going through the situation like this, when they go through the suffering like this, to stand strong on that solid rock. तो वो कब होगा जब विश्वास को छोड़कर लोग जाएंगे, जब हम उन्हें नहीं सिखाएंगे कि ऐसे परिस्थिति में कैसे खड़ा रहना है. They will not rejoice, rather they will start cursing God for the suffering that they're going through. तो वो लोग आनंद नहीं मनाएंगे, बल्कि वो परमेश्वर को कोसने लगेंगे कि ऐसा क्यों तो हमारे साथ कर रहा है. And the last point that I want to say, that we are not just called to be special people and zealous for God, for nothing, but we are zealous because He's coming back. और सिर्फ हम परमेश्वर के लिए zealous है या हम स्पेशल लोग हैं ये नहीं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि वो दोबारा वापस आएगा. For a long time we have been cruising like a cruise ship. हम बहुत आसानी से अब तक आगे बढ़ रहे हैं. You know the cruise ship? Yep, go ahead, say that, bro. Cruise ship. Cruise. Yeah. And there is a battleship. Okay. एक ऐसा होता है कि एक जो सैर करने वाला एक शिप है, क्रूज शिप है, और एक दूसरा होता है जो लड़ाई का एक शिप होता है. So many of us, we love cruising in our cruise ship in our churches. हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रूज जहाज पर जाना अच्छा लगता है. But God wants us to become a battleship. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक लड़ाई का जहाज बने. God wants our churches to become a battleship now. तो हमारी कलीसिया जो है वो एक लड़ाई का जहाज बने. That no matter what happens, even if we die in living for Jesus, in living for God in this world, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें परमेश्वर के लिए मरना भी पड़े, इस जीवन में अगर हमें परमेश्वर के लिए मरना भी पड़े तो भी चलेगा. then I want to live for Christ and I want to die for Christ in this world. मुझे प्रभु के लिए जीना है और मुझे प्रभु के लिए मरना है. Saying things like this, I know that I am sitting in a comfortable house and in a warm house. I've got a nice warm jacket, but I want to tell you that I eagerly waiting for the return of Jesus. भाई जो कह रहे हैं कि उनका घर बहुत ज्यादा अच्छा है, वार्म है, अच्छा जैकेट, वार्म जैकेट उन्होंने पहना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बेसब्री से प्रभु यीशु के वापस आने का इंतजार कर रहा हूं. It says that the blessed hope, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. उस आशा को जो प्रभु यीशु के वापस आने का आशा है, जो ब्लेसेड होप है, उन्हें हम देख रहे हैं. I was thinking, why it is a blessed hope? It wasn't saying the promising hope. It says a blessed hope. वो ये नहीं कहता कि एक वादा की हुई आशा, वो कहता है एक धन्य आशा है ये. Because blessed hope is the hope when Christ comes that He restore everything back to normal. क्योंकि जब प्रभु यीशु वापस आएगा तो जो चीजें गिर गई या खराब हुई थी उन सारी चीजों को दोबारा वो रिस्टोर करेगा, उन्हें वो बनाएगा. He put an end to every evil thing that happened under the sun. वो उन सारी जो बुरी चीजों है उनको खत्म करेगा जो इस सूरज के नीचे होती है. That we no longer in this world caught up and fighting on our own, but that He is with us. Our reward is with us. That is Christ Jesus. तो हम इस दुनिया की चीजों से लड़ते नहीं रहेंगे, लेकिन वो हमारा रिवॉर्ड है. प्रभु यीशु हमारा रिवॉर्ड है. And I want to finish up with this, the last, that we are waiting. The Christ goal, the death of Christ, the goal was that we would be called, we would be set apart, that we would be redeemed as special people, chosen people, zealous for good works, and eagerly waiting for His return on this earth.
तो हम जिन्हें उसने अपनी मृत्यु के द्वारा छुड़ाया है और उसने हमें क्षमा कर कर छुड़ाया है, वो हम उस धन्य आशा की ओर देखते हैं, ताकि जब वो वापस आएगा और सारी चीजों को दोबारा वो रिस्टोर करेगा, उसी की ओर हम देखते हैं। और You know, हम सॉरी और हम वो जीलस लोग हैं जो अच्छे कामों के लिए हम जीलस है, हम पैशनेट है और उसके आने की इंतजार में हम लगे रहते हैं। the early disciples, and to finish off with the early disciples, they whenever they meet together, in the Jewish saying was shalom to one another. तो जब भी जो पहले कलीसिया के लोग एक दूसरे से मिलते थे, तो वो लोग एक दूसरे को शालोम कहते थे। इसका मतलब है परमेश्वर की शांति आपके साथ हो। But the early church, when they were going through Roman rule and under persecution, और वही जो पहला कलीसिया है, जब वो रोमियो के सताव से जा रहे थे, they exchange or they change from saying shalom to Maranatha. तो पहले जो कहता था परमेश्वर की शांति आपके साथ हो, वो कहने लगे मैरानाथा। They knew that Jesus is the Prince of Peace and he can give them peace. वो जानते थे कि वो शांति का राजकुमार है, वो उनकी शांति दे सकता है। But because they were going through such a trial and hardship and persecution, and many of them were many of them were put to death, because either if you renounce the name of Jesus and called Caesar the Lord, then you would you can live. और बहुत सारे लोग उस समय सताव से जा रहे थे, और या तो आप विश्वास को छोड़ दो, या तो फिर आपको मार दिया जाएगा। Or they were asked to make the Caesar the Lord, or call him or acknowledge him as a Lord over the God of the Bible. और जो सीजर, जो रोम का साम्राज्य चलाता था, उन्हें कहा जाता था कि तुम इन्हें अपना प्रभु मानो, और प्रभु यीशु को नहीं, लेकिन उस सीजर को आप अपना प्रभु और परमेश्वर मानो। And I was thinking, what if there is a situation like this happened in our nation, in your nation and India, around the world, what we would do in that trial and in that time, in that situation. अब सोचिए कि अगर इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में अगर ऐसी परिस्थिति आई और सीजर जैसा कोई राज करने वाला हमारे ऊपर राज करने लगे, तो क्या होगा? The people, the early disciples, they knew they could not, with their clear conscience, call Caesar the Lord. क्योंकि वो जानते थे कि सच्चे हृदय से वो सीजर को अपना प्रभु, अपना स्वामी नहीं कह सकते। They knew that Jesus, or God, is the only great God. Jesus is the Lord. और वो जानते थे अच्छी तरह से कि केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है और यीशु ही वो महान परमेश्वर है। So they were ready to die for the name of Jesus. तो वो लोग तैयार थे कि चाहे उन्हें मरना भी पड़े तो। And whenever they come together, और जब भी वो एक साथ आते थे, they would greet one another, Maranatha. तो जब भी वो लोग एक साथ आते थे तो एक दूसरे को कहते थे मैरानाथा। Maranatha, the meaning of Maranatha is come, Lord Jesus, come. तो उनका जो मतलब है वो ये है कि प्रभु आ। We are so busy still in our churches to make things better, to make things lives better. हम लगे पड़े रहते हैं कि चीजों को कैसे अच्छे बनाएं, चर्च में, हमारे परिवारों में चीजों को कैसे अच्छे बनाएं। But we must not forget one thing. बट इन चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए, that until our Lord, Son of God, Jesus Christ comes back, जब तक प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र वापस नहीं आता, until he comes back, we will never have the peace or the shalom. जब तक प्रभु यीशु नहीं वापस आता, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती।
And I was saying somewhere else that these are like a birth pains we are going through right now, according to Matthew chapter 24, that there will be these situations will come and will go, will come and we will go, sometimes major, sometimes minor. तो जैसे एक प्रस्तुति के समय जो स्त्री को जो वेदना होती है, उसी प्रकार ये आएंगे जाएंगे, कभी कभी ज्यादा आएंगे, कभी कभी कम आएंगे, कभी कभी ज्यादा देर रहेंगे, कभी कभी थोड़ी देर रहेंगे, लेकिन ये आते जाते रहेंगे। But we must not forget that we have a purpose. और इन सब चीजों के दौरान हम ये ना भूले कि हमारे लिए एक मकसद है। We have a purpose to glorify God whether we live or whether we die. और हमारा मकसद ये है कि परमेश्वर को हम महिमा दे, भले ही हम जीवित रहे या हम मर जाए। I wish that the church in the West would wake up. और पास्टर चाहते हैं कि सचमुच जो वेस्टर्न के जो चर्चेस हैं वो जाग जाए। That we would not be like those who've fallen asleep. ताकि हम उनके जैसे ना हो जो सो गए हैं। That when the situation like this hit to our nation, that we would give up easily. तो हम ऐसे न बने कि ऐसी कोई परिस्थिति अगर हमारे ऊपर आती है तो हम जल्दी से हार मान जाए। But we would be like the early believers. तो हम उस पहले की कलीसिया थी उस तरह हम बन जाए। I had said to the Lord that, Lord, if I am leading somebody to Christ, I do not want a weak believer. I do not want a person that is just hinged upon me, based upon my belief, but based upon your word that is living and that does not leave us in the darkness. और पास्टर प्रार्थना करते कि अगर मैं किसी को प्रभु के पास लेकर आऊं तो एक कमजोर विश्वासी ना हो और वो मुझे पकड़कर अब मेरे सहारे चलने को नहीं देखे, लेकिन वो आपके रिश्ते में और आपके वचनों में वो बढ़ जाए। If you're winning somebody to Christ, if you're leading somebody to Christ, you must warn, I must warn that person, that woman, that you will go through the hardship, but believe on the Lord Jesus, that once we get to the end, our salvation, our redemption is drawing near. तो जब आप प्रभु यीशु में किसी को लेकर आते तो उसे आप ये कहे कि हम सबको सताव से जाना है, लेकिन अगर उस सताव में आप आखिर तक खड़े रहोगे तो हमारे लिए प्रभु यीशु का जो छुटकारा है वो जरूर मिलेगा। You know, in the last, and this is where I'm going to finish off in the book of Revelation, how the whole story, you know, there's a story that going from Genesis, and in the last book, Revelation, it ends, and it says the Spirit in the last book, and it goes like this. It says the Spirit and the bride say come. और जो प्रकटीकरण का जो पुस्तक है उसका लास्ट का वचन ये कहता है, आत्मा और दुल्हन कहती है कि आजा। See, we are the bride of Christ. हम प्रभु की दुल्हन हैं। Special people. हम वो चुने हुए स्पेशल लोग हैं। Chosen, set apart by his death on the cross. और हमें चुना हुआ है और हमें अलग किया है प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा। And he wants to make us mature, equally yoked with his son. और वो चाहता है कि हम बढ़े उसमें बढ़े और उसके पुत्र के साथ हम इक्वली उस बोझ को लेकर चले। You know, when a husband and a wife are not equally yoked, you know that there is a tension in the family. You know that things are not working properly. जब एक पति और पत्नी साथ में रहते हैं और वो लोग बराबर से अपने कामों को बांट नहीं लेते, तो आपको पता है कि उस घर में बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर और टेंशन होने लगता है। And I believe that the Lord, before he comes back, he wants to breathe over his church. He wants to breathe over all of us. And despite of where we live, whether we lack things, whether we are rich or poor or dark, whoever we are, he wants to make us equally yoked with his son. और वो आने से पहले वो हमारे ऊपर ब्रीथ करना चाहता है
ताकि हम उसके पुत्र के जैसे समान योक में, समान बोझ में हम चल सके। We're waiting for his appearing, but as we are waiting for his appearing, we are ready to do what he wants us to do. We are ready to make him known. We are ready to preach him among the nations. We are ready to declare him to the people that is dying at the moment. और जैसे हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में कह रहे हैं। जो दुनिया जो नष्ट हो रही है, जो नाश हो रहा है, उन्हें हम प्रभु यीशु के बारे में कह रहे हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाकर हमें यीशु के आने के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। Let us believe with this as I finish here. Let us just believe and pray that God, I want to be equally yoked with your son. I don't want to, when you come, when the world goes to chaos, I don't want to give up. I don't want to give hope in you. तो हम ये विश्वास करें, जैसे हम तेरे पुत्र के साथ समान बोझ में लेकर चलते हैं, और जब सताव आता है, जब परेशानी आती है, जब तकलीफ आती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन में हार मान लूं और उन विश्वास करना वहां पर मैं छोड़ दूं। मैं नहीं चाहता कि उस परिस्थिति में मैं कहीं पर भी हार जाऊं। I don't want to be offended, Lord. मैं नहीं चाहता कि हर छोटी बातों के लिए मैं बुरा मानूं। Lord, I thank you for your word. मैं धन्यवाद करता हूं तेरे वचनों के लिए, that you have chosen me, you have called me your own people. और तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे चुना है और मुझे अपना व्यक्ति कहकर तूने मुझे बुलाया है। I thank you and I praise your mighty name, Lord Jesus. मैं तुझे धन्यवाद करता हूं और तेरे नाम को स्तुति करता हूं। Lord, use me, Lord, in this situation. इस परिस्थिति में भी तुम मेरा उपयोग कर। Lord, let my faith grow in this hour, Lord, I pray. और मेरा विश्वास जो है वो इस परिस्थिति में, इस घड़ी में भी बढ़ने के लिए मदद कर। Let me be your bride that is waiting eagerly for coming. और मुझे वो दुल्हन बनना है जो तेरे आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। Lord, I want to be that bride that is equally yoked with you. और एक ऐसी दुल्हन जो तेरे साथ समान बोझ लेकर चल रहा है। Lord, I just want to praise you. I just want to thank you in this situation, in this lockdown, Lord Jesus. मैं आपको धन्यवाद करता हूं और इस परिस्थिति में मैं आपके नाम को स्तुति करता हूं। And I pray for the church in Mumbai, India, El Shaddai, Father, every believer, every member, every person, every child, every young and old, God, I pray that you would breathe over your church, God. मैं प्रार्थना करता हूँ एल-शदाई चर्च जो मुंबई में है, उसके हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए कि तेरा आत्मा का उनके ऊपर आए। Let the faith grow in you more stronger in this lockdown, Lord. I pray. और सारे कलीसिया के लोगों का जो विश्वास है वो इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाए। Let their faces be so radiant, Lord Jesus. ताकि उनका जो चेहरा है वो चमकने लग जाए। That the people around them will begin to wonder, well, how come they are even in this situation are so fresh. तो इस परिस्थिति में भी कैसे लोग इतने ज्यादा फ्रेश है, इतने ज्यादा चमकने वाले रह गए। And Lord, let the people around them know that the secret of their life. और जो लोग उनके आजू बाजू है वो जान पाए उनके जीवन का रहस्य क्या है। Yes, Lord, I just pray for them that you bless them, you protect them. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें आशीष कर और तू उन्हें सुरक्षित रख। And Father, use them, Father, as they come out of this lockdown for your glory, God, I pray. और जैसे हम लॉकडाउन से बाहर आते तो उनका इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। In Jesus' mighty and wonderful name, I ask this prayer, Lord. प्रभु यीशु के मीठे और महान नाम में हम मांगते हैं। Amen. 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 Thank you so much, Pastor Prakash. Thank you for sharing your word, the word that God gave you to share amongst us. And we are so grateful for the time that you spend with us. And may God bless you and your family and the ministries that you do more abundantly. Thank you for your time.
Thank you so much. നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ I will just speak in Malayalam, so probably പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ പുള്ളിക്കാരൻ ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കറിയാം സമയം നമ്മൾ കൂടിപ്പോയി. സാധാരണ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ അല്ലെ 3/4 മണിക്കൂർ ദൈവവചനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ദേവദാസൻ ആത്മഭാരത്തോടെ പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവദാസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ടുള്ള പി തോമസ് അങ്കിള് ദേവദാസിനെ പറ്റി നമ്മുടെ പി പീറ്റർ പാസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ദേവദാസൻ പി പീറ്റർ പാസ്റ്റർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ. കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനൻ ബലം, പാരിതിൽ പാർക്കും നാൾ അവനൻ ബലം, അവനെന്റെ സങ്കേതം വിശ്രാമം നാൾ തോറും, അവനെന്റെ സർവ്വവുമേ, അവനെന്റെ സങ്കേതം വിശ്രാമം നാൾ തോറും, അവനെന്റെ സർവ്വവുമേ. പല നാൾ കരുതി ഞാൻ ഏകനെന്ന്, അന്നാളിലവൻ എന്നോട് ചൊല്ലി, പല നാൾ കരുതി ഞാൻ ഏകനെന്ന്, ആ നാളിലവൻ എന്നോട് ചൊല്ലി, ലോകാന്ത്യത്തോളവും കൂടെയിരിക്കുന്നു, എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ലോകാന്ത്യത്തോളവും കൂടെയിരിക്കുന്നു, നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനൻ ബലം, പാരിതിൽ പാർക്കുന്നാൾ അവനൻ ബലം, അവനെന്റെ സങ്കേതം വിശ്രാമം നാൾ തോറും, അവനെന്റെ സർവ്വവുമേ, അവനെന്റെ സങ്കേതം വിശ്രാമം നാൾ തോറും, അവനെന്റെ സർവ്വവുമേ. ഹല്ലേലൂയ. പല നാൾ കരുതി നമ്മൾ ഏകരെന്ന്, എന്നാൽ ആ നാളിൽ അവൻ നമ്മളോട് ചൊല്ലി, ലോകാന്ത്യത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുമുണ്ട്. Thank you, Prashant brother, for translating. Thank you once again, Pastor Prakash, for spending your time with us. We are so grateful for your time. We know that you're very busy, but thank you for spending and sharing some of the time. I know there are certain limitations in the Zoom meeting that we can openly share, but we are so grateful for your time and the word that you shared and the wisdom that God has put in your heart. And I thank you, Prashant brother, also for translating. ഇനിയുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ Prakash brother, you can leave if you want, because we will be more having a little more in Malayalam. So you are all free to leave. It's okay. Thank you so much. Okay. Yeah, we'll catch up with you later. God bless you all. Thank you. Bye. Take care.
നമ്മുടെ പി തോമസ് അങ്കിളിന് അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ആ ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവദാസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ദേവദാസൻ പി ട്രിപ്പാഷൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി. അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. പി തോമസ് അങ്കിൾ, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്? ക്രിസ്റ്റി ക്യാൻ യു അൺമ്യൂട്ട്? ഓക്കെ, പി തോമസ് അങ്കിൾ. യാ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു പകൽക്കാലം ദൈവമക്കളും കൂടാതെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും മുമ്പാകെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്കിടയാക്കി വലിയ കൃപയ്ക്കായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ സഭയായി തീരുമാനിച്ച് കുറച്ചതായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ വിൽസം പാസ്റ്ററുടേതായ സെന്റ് ഓഫിൻ്റെതായ വിവരം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാല് നമ്മള് ഇന്നലെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ മാസം 13 ശനിയാഴ്ച 10:30 മണിക്ക് നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തണം ദൈവസച്ചു ടീമിനെ അത് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ ഇന്നലെ പകൽക്കാലം ആ മീറ്റിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വിൽസം പാസ്റ്ററെ ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദേവദാസൻ വിട പറയുകയുണ്ടായി. എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാറ്റി. ഇന്നലെ മുതല് നമ്മുടെ പുതിയതായി എൽസദായി ദൈവസഭയെ ചാർജ് എടുക്കുവാൻ റവറന്റ് പി പീറ്റർ പാസ്റ്റർ ബീരാറിൽ താമസിക്കുന്നു. ആ ദൈവദാസൻ ഇന്നലെ മുതൽ എൽസദായി ദൈവസഭയുടെ ഇൻചാർജായി ചാർജ് എടുക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എൽസദായിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എൽസദായി ദൈവസഭയുടെ പാസ്റ്ററായി ഇൻചാർജായി റവറന്റ് പി പീറ്റർ പാസ്റ്ററാണ് ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പീറ്റർ പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് ദൈവജനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവദാസന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അല്പം മോശമാണ് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഓരോ ദിവസവും ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിച്ച് ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും ഭവനത്തിനകത്തിരുന്ന് എന്താ ദൈവദാസനാൽ കഴിയുന്നതായ കാര്യാദികളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എൽസദായി ദൈവജനം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വലിയ പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഞാന് ബോംബെയുടെ പട്ടണത്തിൽ കടന്നു വന്നതായ സമയം മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 36 വർഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഫിലിപ്പോസ് വാസോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ ഈ പീറ്റർ വാസയും കാണുവാൻ ഞാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ദൈവസഭയിൽ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവദാസൻ, ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള പക്വതയുള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നടുവിൽ നല്ല ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ദൈവദാസൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാരീരികമായിട്ട് അല്പം ക്ഷീണമുള്ളത് കൊണ്ടും ദൈവദാസന് അല്പം ഇച്ചിര ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പുതിയ പുത്തൻ കൃപയോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകൻ തൂവൽ വെച്ച് പുതിയ ഒരു അനുഭവത്തോടെ വരുന്നത് പോലെ ദൈവദാസൻ ഈ എൽസദായി ദൈവസഭയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതിന് ദൈവദാസനോടൊപ്പം എൽസദായിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും വളരെ ശക്തിയോടെ ആ ദാസനോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ദൈവസഭയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയില് ഇന്നലെ ഈ മീറ്റിംഗ് അധികം പേര് കൂടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും കടന്നു വന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതായ പലരും തക്ക സമയമായപ്പോൾ വന്നില്ല എന്നൊരു കുറവ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും സാരമില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റെടുത്താൽ അത് മനുഷ്യർ ആരും വന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അത് ചെയ്തെടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇന്നലത്തെ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഇന്നലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തത് ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ഇടയായി. അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ട് VI യോഹന്നാൻ ദേവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ 2 ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവദാസന്റേതായ ആ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി ഇന്നലത്തെ സെന്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്ത തീരുമാനത്തിൽ ഒത്തവണ്ണം
എടുത്തോളൂ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചതായ ദൈവമക്കൾക്കെല്ലാം വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തു തന്ന നിത്യപാലുവായ ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ നിന്നത് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇനിയും എൽസദായി ദൈവസഭയോടുള്ള വാഗ്ദത്ത വചനം നാം മറന്നു പോകരുത്. എൽസദായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നവൻ, നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്നവൻ, നമ്മെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവൻ. അവന്റെ നീട്ടിയ ഭുജത്താൽ നമ്മെ താങ്ങി അവൻ നടത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവസഭ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ബലത്തോടെ, ആ വചനത്തോടെ, ആ ശക്തിയോടെ നാം ഒന്നിച്ച് പൊരുതുവാൻ, ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുവാൻ, ഒന്നിച്ച് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മൾ അലാവോളം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വതന്ത്ര പ്രശ്നങ്ങള്, ഭാരങ്ങള്, വേദനകള് ഒക്കെ കടന്നു വരും. അതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവുണ്ട്. അവൻ പറയുന്നു, ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. എൽസദായി ദൈവമക്കളോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവശക്തിയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ദൈവസഭയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കൂടാതെ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവസഭയുടേതായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഭൗതികമായ ചില നന്മകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമായി നമ്മള് കൂട്ടായ്മയില്ല, ദശാംശമില്ല, സ്വോത്രകാഴ്ചയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ദൈവസഭയുടെ ഫണ്ടിൽ പൈസ കുറവാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കിൽ എൽസദായി ദൈവസഭയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ദൈവമക്കൾ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വരിൽ അയച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനുമായി നമ്മുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാം എപ്പോഴും അത് നന്മയായി അനുഗ്രഹമായി തീരും. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ ദൈവകർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പിന്നെയും ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ സ്തുതിക്കാം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പീറ്റർ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ആ ദൈവദാസന്റേതായ കാര്യാദികൾ ദൈവദാസൻ ഇപ്പോൾ അല്പം പറയും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കാം. ജോയൽ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പി തോമസ് അങ്കിൾ. ചെയ്ത എല്ലാ ശുശ്രൂഷ ദൈവം മാനിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ചില നന്മകളും ചില അനുഗ്രഹങ്ങളും വരുമ്പോഴായിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം ഇനി ഇടയാക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇനി അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പി പീറ്റർ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. ദേവദാസൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച്, ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ ഗസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ദേവദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ മാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവദാസനാണ്. ദേവദാസൻ അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you for Pastor Prakash for the wonderful message God has given today. We have been blessed by the word of God by spoken Pastor Prakash. And also I thank God for Prashant, who has translated wonderfully to Hindi, and we all are blessed by that translation. ഈ ഒരു സമയത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗോരഗാവ് എൽസദായി ചർച്ചിലെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെ രാവിലെ സമയം എൽസദായി സഭയുടെ പാഷനേജിൽ വെച്ച് സെൻഡ് ഓഫ് മീറ്റിംഗും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന പാസ്റ്ററെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനായോഗവും നടന്നു. ആ കാര്യങ്ങളെ ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ സഭാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ തോമസ് ബ്രദറിനെ സൂപ്രണ്ട് നിയോഗിക്കുകയും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സഭ ആ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ചാളുകളെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുവാൻ ഇടയായി. പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അതിനായി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുവാനും ഇടയായി. യാത്രയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ സഭയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തക്ക സമയത്ത് എത്തുവാനും മടങ്ങി വരുവാൻ സഹായിച്ചു. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സുസമ്മാമയ്ക്കായി
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ ദൈവദാസിയെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വിശേഷാൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ജോയൽ വളരെ നല്ല പക്വതയോടും ജ്ഞാനത്തോടും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടർന്ന് ഏറ്റെടുത്ത എൽസദായ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം നിന്ന് കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയും കർത്താവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയലിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. He's a very teenage, even though he prayerfully dedicated for the work on behalf of El Shaddai Church, and he is also upcoming or lift to use for the kingdom of God the coming days. Hallelujah. Thank you. അതുപോലെ തന്നെ കശ്യയ്ക്കായി കശ്യയുടെ കുടുംബത്തിനായും നന്ദി പറയുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണല്ലോ ജമീമ. കുടുംബമായി അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവദാസൻ Philippos pastor is promoted to glory, even though he showed a good way to his 3 children. They're in the Lord, they're working for the Lord, they're so dedicated and prayerfully. They are lived with his father and mature understanding that Pastor Philippos, who has done his work in Mumbai city, especially the pioneer and also the president of the church and also the superintendent, he had the position and he had done a lot of good things in the city of Mumbai, especially the church at Goregaon El Shaddai. Hallelujah. ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കും സന്തോഷമായി ആ ചാർജ് സ്വീകരിപ്പനിടയായി. Physically now I am okay, but we prayerfully dedicated for the coming days with the believers, and is especially working that the area because of the lockdown is continuing. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോംബെയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഓടുന്നില്ല, ഇതുവരെ ഓടിയിട്ടില്ല, ബസ്സസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൽ ശദ്ദായി സഭ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയാണ്. ദൈവത്തിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ സഭയെ കർത്താവ് ദിവസങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുടുംബമായി ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്സിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴും അത് റിക്കവറി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു. ഷെറിൻ അതിന് ബ്ലസ്സി അവരും ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൈത്താങ്ങുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അയക്കുന്നത് വിരാർ വെസ്റ്റില് ആണ്. കർത്താവ് തന്ന ഭവനം അവിടെ ആയിരുന്നു. അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ക്രമീകരണങ്ങൾ. ഈ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെട്ടെന്ന് അത് കട്ടായിടയായി. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയങ്ങളിൽ കട്ടാവുകയും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അത് കടന്നു വരുവാനിടയായി. ഞങ്ങൾക്ക് ആരംഭം മുതൽ ഈ സമയം വരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. I thank you for Brother Joel, who was led by the meeting. It is a nice leading and wonderful man of God. You coming days we pray for you. ന്യൂസിലൻഡിലായിരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമായി നിങ്ങൾ ദൈവവേലയിൽ മുംബൈയിലല്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പോയി കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുള്ള വഴികൾ ദൈവം ഒരുക്കി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഞാനിവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നില കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭവനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല സെക്രട്ടറി തരുവാനിടയായി. ആ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. എൽ ശദായി ചർച്ചിന്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള സഹകരണവും ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ആത്മീയ വർധനവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളാൽ ആവോളം അത് ക്രമീകരിച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശ നിങ്ങളെ സഭയായി, ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി എൽ ശദായി സഭയെ അറിയിക്കും. ഈ സമയം നൽകിയ ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ ജോയലിനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ സമയത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ നന്മകളും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. Shall we pray? പ്രാർത്ഥിക്കാം. Shall we pray? Yes, please. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല കർത്താവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് അങ്ങയെ വാഴ്ത്തും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ജോയലിനോടും അതുപോലെ തന്നെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആമേൻ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്റെ സമാധാനം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ പട്ടണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആമേ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ COVID-19 എന്നുള്ള മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ നടുവില് ലോകം വിറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈസല്ലോ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുന്നേറുവാൻ ആമേൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണം. എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ശാസിക്കണം. മുംബൈ പട്ടണത്തെ കർത്താവെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം. ന്യൂസിലാൻഡിനെ കർത്താവെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം. മറ്റനേക രാജ്യങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ പ്രാർത്ഥന അഥവാ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളുടെ മുംബൈയിലെ മറ്റ് ദൈവസഭകള് ഹല്ലേലൂയ ദൈവദാസന്മാർ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന ഹാമേ പ്രതിസന്ധികള് എല്ലാറ്റിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തിരുവചന സന്ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം. മകനെ കുടുംബമായി ആദരിക്കണം. വചനത്തെ പ്രത്യാശയോട് നൽകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. മാറാനാഥ ഹല്ലേലൂയ. ഓ യഹോവ ശാലോം. യേശുവിന്റെ ആ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഞങ്ങളും പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് വരും നിശ്ചയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാൻ കർത്താവേ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം സഹായിക്കണമേ. നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ശദായി സഭയുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ്. ചില മാസങ്ങളായി ആമേൻ സഭ കൂടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം. സാമ്പത്തികമായ നന്മ ആമേൻ കർത്താവ് നൽകി ആ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എൽ ശദായി ചർച്ച അവർ ചെയ്ത എല്ലാ സാമ്പത്തിക നന്മയ്ക്ക് ഉപകാരത്തിനും അടിയൊരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഇനി ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തും. സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കും. മാനവും മഹത്വമെല്ലാം തിരുവേലിക്ക് അർപ്പിക്കും. രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി പ്രാർത്ഥിക്കും. കൃപയോടെ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ. നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയേക്കാവും നമ്മോടും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും ദൈവജനം സംസാരിച്ച ദൈവദാസനോടും ദൈവസഭയോടും ായിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ പ്രിയ ജോയൽ വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ സുസമാമയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളും യേശു കർത്താവിന്റെ വരവോളം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.
ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ജയത്തിനായി നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Hallelujah. Thank you so much, Pastor Uncle, Pastor and Pastor Andy ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രത്യേക നന്ദിയോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാം. നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിംഗ്സിനകത്ത് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിനകത്തുള്ള കൂടുതലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആന്റി ഉണ്ട്. ആന്റിക്ക് ശാരീരികമായ ചില ഇഷ്യൂസ് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവം സഹായിച്ചു, വിടുവിച്ചു. അവൻ നമുക്ക് തക്ക കാന്തയായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്നും ഉണ്ട്. ആന്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബലഹീനതയിലും തികഞ്ഞു വരുന്ന ശക്തി കൂടുതലായിട്ട് വളരുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവര് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഉള്ള മീറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും. പാസ്റ്ററായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അടുത്ത മീറ്റിംഗ് കാണുന്നവരെ ഓൾ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.